સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં ટપોરીઓનો આતંક સામે આવ્યો છે। યુવતીઓ છેડતી અને પથ્થરમારો કરી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી છે તેવા આરોપસર સુરત પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત કરી સાથે પોલીસ કમિશનર પાસે આવા સામાજિક તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે। સુરત શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળતી જાય છે। લૂંટ, હત્યા કે મારામારી જેવી ઘટના બનવી સામાન્ય થઈ ગઈ છે। ત્યારે સુરત શહેરના લિંબાયત વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક સામે આવ્યો છે। યુવતીઓની છેડતી અને ધાકધમકી આપી પથ્થરમારો કરી હંગામો મચાવનાર અસામાજિક તત્વો વિરુદ્ધ સુરત પોલીસ કમિશનરને લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે। હાલ આ મામલે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે। ये लोग हम चार बहने और ये लोग हमारे साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं हमसे। हम अगर पुलिस स्टेशन गए तो हमारी वहाँ पे सुनवाई कोई लेता नहीं। ये मेरी छोटी वाली बहन है तो उसका ट्यूशन में जाते हैं तो दुपट्टा कोई खींचता है, कोई कुछ खींचता है। हम अगर पुलिस स्टेशन बोलने के लिए गए तो हमारी सुनवाई नहीं करते ये लोग। ये हमारे सामने वाले लोग हैं। कौन? क्या नाम क्या? अज्जू, आरिस, दानिश, समीर, ये और उसके दोस्तार लोग बुला लेता है और गंदी गंदी बातें करता है। क्या पता, हमें नहीं पता। ये इनकी नज़र ही खराब है, इनकी दादागिरी है मोहल्ले में। वो लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं किया, इसलिए हमको कमिश्नर ऑफिस आना पड़ा। क्या हमारे न्याय करो भाई। क्या करते वो लोग? ये सब लोग ये लोग छेड़ाछाड़ी करते हैं, गंदी गंदी बातें हमसे बोलते हैं। पुलिस स्टेशन का तो ये लोग फरियाद नहीं लेते। नहीं वो लोग ना, हम अगर वो लोग छेड़ाछाड़ी करते, हम लोग पुलिस स्टेशन गए। उस दिन मैं पुलिस स्टेशन भी जाके आई 17 तारीख को, तो पुलिस वालों ने मेरी FIR नहीं लिए। हाँ, घर पे हमारे पत्थर मारते हैं लोग। उसकी फुटेज है हमारे पास। आने का आरिफा नाम की लेडीज है सर। ब्यूरो रिपोर्ट S24 न्यूज़, सूरत।